to a soulful morning, a spiritual morning. Let's start this beautiful morning by going inwards and today expressing our eternal gratitude to the divine for merging Serena, who we all have been working with for the past 1 week, for allowing her to make the transition easily. So let's close our eyes, center, balance, align ourselves. Take a deep breath in, fill ourselves with light, and take a deep breath out and exhale the darkness. Take a deep breath in and fill ourselves with love, with divine love. And let's take a deep breath out and exhale anything which is lack of love. Take a deep breath in, filling ourselves with joy. And take a deep breath out, releasing all things that's hurt. Today, we've gathered here to pay our ode to the Divangat Atma, to Sunena, who once was a beautiful woman, who was part of the Bhoroka family, the Agarwal family, born to the Jindal family, who we all know has chosen at her soul level. Now, with assuredly, I know because it was channeled and it was not just a mere accident. She chose it and given a chance. So now that the soul has chosen to make the easy ascension and is happy in this new love and light, let's help her understand whatever her responsibilities here on Mother Earth were, and whatever she's transferred to whoever, they will be carried out to the best of the responsibility, to best of love and light. So today, let's speak to Sunena, who we know is around us. Send her high healing. She's in that phase herself of seeing her loved ones grieve for her. She knows it. She's hurt them while moving, but she also knows that this is what she had chosen. So let's release any grief or any untoward feeling that she may feel during the day or the days to come. Today is the last call of gratitude, of prayer, of healing. But this time it's for her soul because there's no more a body. So let's align with the energy of the soul around us, the soul of Serena. Whatever the name is, we know it's part of the Eternal One. Dear soul, thank you, thank you, thank you for having chosen to live as Sunena Jindal Agarwal in a beautiful body, with a beautiful mind, with lovely, vibrant energy, with a zest for life, with a flow for life, for having learned to love, to care, to create, to flow with everything and anything. You lived a life of beauty, of joy, of delivery. You, my dear soul, have now chosen to make your way towards eternal being. And we are with you in this journey of yours. We helped you release yourself, and we know somewhere deep inside we were a part of your release, which you expressed very gratefully. We realize that now that you are one with the God above, you still wish to stay here on Mother Earth until these 13 days go by, as you've expressed. And during these 13 days, we want you to know that do whatever you want, but finally make your way and merge with the One. We are all here gathered for a purpose. The purpose to let you free. The purpose to assure you that what needs to be done will be done in its own defined
time. And we know that you are guiding us, guarding us, protecting us. And through us, whatever you want is going to be done. Because you know deep inside that it is the right step that you've chosen. We are with you yet again in your this inner conquest, in this inner journey of discovering who you wish to be. Life has been beautiful for you. You have done everything that you wanted, created a wonderful life. Whatever your sole purpose was, which you chose, you now feel it was complete here, and you decided to merge. And now, after having understood why, we are with you. We assure you that all will be beautiful, and we as energy, few will be able to take part, procreate the way you wanted. Few will be just there to love, to bless, to respect your decision. Atma Namaste. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Let's all look forward to Sunaina's ascension in the next 12 days and wish her soul a beautiful, lovely beginning to the light being. And now, let's chant for 5 minutes. Soham. So, what we have to do is, as we take a deep breath in, say the word so ever so gently. It doesn't have to be aggressive. And when we exhale, it has to be again beautifully chanted hum. So hum. So hum means I am that I am. The universe exists within me as much as I exist in the universe. And so, with this beautiful, wonderful beginning, let's chant so hum. So, take a deep breath in and so feel your stomach rise. And then, when it's time to release, hum. Feel your stomach shrink. Let's keep chanting until 5 minutes. So hum. So hum. So hum. So hum. So hum. Also, I want you to open your eyes. So, with this beautiful, with your hands like this, right? If you press it here, or if you can just press it here, and if you just put your mudra like this, the second finger folded, and this thumb here, like pressing this. This is pressing your center. This is pressing this. Is this clear? Right? And now with just this mudra, if we continue to inhale by saying so, and exhale by saying hum, we will be waiting and ready. And if we're open and receptive, then the universe is going to be answering our questions, right? So I'm sorry for having made you open your eyes, but I just realized that you need to know this. So once again, let's continue. So hum. So hum.
Soham. 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 And finally, ever so gently, just realize one thing, that when we begin this beautiful meditation, when we inhaling so and exhaling hum, and if you observe this for 5 or 10 breaths, we're noticing the vibration and the sound quality of our in breath and out breath. There's a difference. If you listen to the so sound of the inhalations and the hum tone of the exhalations, we will have settled into the rhythm automatically. And now this will help us bring attention to that gap, that pause between so and hum. And that gap is a sense of space. If we continue to really notice that pause and that beautiful silence between these breaths, when our mind wanders, we can draw it back and again start concentrating on the chanting of so in inhalation and hum and exhalation. Now, I'm just giving this guidance for tomorrow because we will chant this so up for some days to come. When we begin to use this pause, this use this phase of our breath cycle, and if we start to observe any part of our physical body, which could be pain, distress, anxiety, confusion, the minute you inhale so and you release and you see the pause between your breath, inhale and exhale, you will notice any discomfort. And for this, you should observe it for 5 and 10 minutes. I'm not saying it will get healed at this juncture, but you'll start noticing the pains. But now, after we have developed the mastery of Soham chanting, when we give full attention to our body and we use a pause to think of any stress that exists within our mind, we will be able to notice the mental distress. Again, this pause can be used to take note of the part of our life that feels stressful, whether we are calm, whether we are not, whether we are uh, observing in a controlled fashion or we are distressful.
This pause will help us observe. So again, you just have to notice any five external, and we have to notice any external breath for 5 to 10 counts. Now, finally, this pause, we use it to deeply focus on healing, bringing healing energy to our whole being. So initially, this is like 5-step process. So you will be using 25 sows and 25 hums. In the first five, we'll observe. I'll talk about this tomorrow also. In the first five, we will just be settling in the sound of so hum, so hum, so hum, and feeling the space like in that pause. In the second part, we'll be looking at any physical discomfort that we have. In the third part of the five so hums, we'll be noticing any mental distress. In the fourth part, we'll be observing any external distress. In the fifth part, we'll bring healing energy to our whole being. And this we can again go on not just to 5, but to 10 breaths. So this is what we'll be doing tomorrow onwards for a few days to come. But what does Soham mean again? Ask, so, hum, who am I? So we always have heard, right? Ask and we shall receive. So is ask and you shall receive. Shunya, it strengthens hearing. So when we silently repeat with each breath or, out loud, all the answers to the questions that we have, who am I, or we are asking for something. If we are putting our mudra correctly, the middle finger touching the palm and the thumb putting pressure on the middle finger, then if you're open to the answers from the universe, a lot of downloads will come, not just during meditation, but throughout the day. It's extremely powerful, and we must practice it so much. With this, let's be grateful to the wonderful session. Rub our hands together. Bless our wonderful, 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 wonderful eyes. Bless our wonderful body. And now get ready for our wonderful session, where we are today going to be reading the second chapter, I guess. We started a book, Healing, right? And let's see where you and I'm guided to take this journey forward. Lots of love and gratitude. Let's start the session. I thank all of you for joining me the last minute. I didn't even know that I could do it, so I didn't intimate yesterday. So now we're reading this book, Through Time into Healing. And this book is about, this chapter is about hypnosis and regression. Hypnosis is the main technique I use to help patients access past life memories. Many people have questions about what hypnosis is and about what happens when a person is in a hypnotic state. But there's really no mystery. Thank you, Jyoti ji. Strength and love for me, and I wish strength and love for you too, to heal your pain, because I'm sure all of us are carrying pain. I am in pain right now, but I'm also realizing that she's chosen this. Okay. Hypnosis is a state of focused concentration, of the sort many of us experience every day. When you are relaxed and your concentration is so intense that you're not distracted by outside noises or other stimuli, you're in a light state of hypnosis. One sec. Don't message anybody right now. We'll talk about this after the session is over. I need to center balance and light myself. Give me just 2 minutes. Ah, all hypnosis is really self-hypnosis in that you, the patient, controls the process. The therapist is merely a guide. Just give me a minute. I'll just come back. Sorry.
Okay, I'm back. Settled, balanced, aligned again. All right. So, all hypnosis is really self hypnosis in that the patient controls the process. The therapist is merely a guide. Most of us enter hypnotic states every day when we are absorbed in a good book or a movie, or when we have driven our car the last few blocks home without realizing how we got there. Whenever we have been on automatic pilot, one goal of hypnosis as well as meditation is to access the subconscious. This is the part of our mind that lies beneath ordinary consciousness, beneath the constant bombardment of thoughts. Subconscious, between the constant bombardment of thoughts, feelings, outside stimuli, and the other assaults on our awareness, the subconscious mind functions at a level deeper than our usual level of awareness. In the subconscious mind process, occur without our consciousness perception of them. We experience moments of intuition, wisdom, creativity when these subconscious processes flash into our conscious awareness. The subconscious is not limited by our imposed boundaries of logic, space, and time. It can remember everything from any time. It can transmit creative solutions to our problems. It can transcend the ordinary to touch upon a wisdom far beyond our everyday capabilities. Hypnosis accesses the wisdom of the subconscious in a focused way in order to achieve healing. We are in hypnosis whenever the usual relationship between the conscious and subconscious mind is reconfigured, so that the subconscious plays a more dominant role. There is a broad spectrum of hypnotic techniques. They are designed to tap into a broad spectrum of hypnotic states from light to deep levels. In a way, hypnosis is a continuum in which we are aware of the conscious and subconscious mind to a greater or lesser degree. I have found that many people can be hypnotized to a great suitable for therapy if they are educated about hypnosis and if their fears are discussed and allayed. The majority of the public has misconceptions about hypnosis because of the way television, movies, and stage shows have depicted it. When you are hypnotized, you are not asleep. Your conscious mind is always aware of what you're experiencing while you're hypnotized. Despite the deep subconscious contact, your mind can comment, criticize, and censor. You're always in control of what you say. Hypnosis is not a truth serum. You do not enter a time machine, suddenly find yourself transported to another time and place with no awareness of the present. Some people in hypnosis watch the past as if they are observing a movie. Others are more vividly involved with more emotional reactions. Still, others feel things more than they see. Sometimes the predominant reaction is that of hearing or even smelling. Afterwards, the person remembers everything experienced during the hypnosis session. It may sound as though it requires a great deal of skill to reach these deeper levels of hypnosis. However, each of us experiences them with ease every day as we pass through the state between wakefulness and sleeping, known as the hypnagogic state. We are in a type of hypnagogic state where we are just waking up and can still remember our dreams vividly, but we're not yet fully awake. It is a period between from before everyday memories and concerns re-enter our minds. Like hypnosis, the hypnagogic state is a deeply creative one. When we pass through it, the mind is completely turned inward and can access this inspiration of the subconscious. The hypnagogic state is considered by many to be a genius state without any boundaries or any limitations. When we are hypnagogic, we have access to all our resources and none of our self-imposed restrictions. Thomas Edison valued the hypnagogic state so highly that he developed his own technique to maintain it while he worked on his inventions. While sitting in a certain chair, Edison used relaxation and meditation techniques to reach the state of consciousness that is between sleep and wakefulness. He would hold some ball bearings in his closed hand, palm down, while resting his hand on the arm of the chair. Beneath his hand, he kept a metal bowl. If Edison fell asleep, his hand would open. The ball bearings would fail into the metal bowl and noise would awaken him. Then he would repeat the process over and over again.
The hypnagogic state is very much like hypnosis and actually deeper than many levels of hypnosis. By helping the patient to reach a deeper level of his or her mind, a therapist who's skilled in the techniques of hypnosis can dramatically accelerate the healing process. And when creative ideas and solutions extend beyond personal problems, large segments of society can benefit. Us all have benefited from Thomas Edison's invention of the light bulb. The process can touch the world. Listening to someone's guiding voice aids in focusing concentration and helps a patient reach a deeper level of hypnosis and relaxation. There is no danger in hypnosis. Not one person I have ever hypnotized has become stuck in the hypnotic state. You can emerge from a state of hypnosis whenever you want. No one has ever violated his or her moral and ethical principles. No one has involuntarily acted like a chicken or a duck. No one can control you. You are in complete control. In hypnosis, your mind is always aware and observing. That is why people who may be deeply hypnotized and actively involved in a childhood or past life sequence of memories are able to answer the therapist's questions, speak their current life language, know the geographical places they're seeing, and even know the ear which usually flashes before the inner eyes or just appears in their mind. The hypnotized mind, always retaining in awareness and the knowledge of the present, puts the childhood or past life memories into context. If the year 1900 flashes and you find yourself building a pyramid in ancient Egypt, you know that the year is BC even if you don't see those actual letters. This is also the reason why a hypnotized patient finding himself a peasant fighting in a medieval European war, for example, can recognize people from that past life whom he knows in his current life. This is why he can speak modern English, compare the crude weapons of that time with those he might have seen or used in this lifetime, gives dates, and so on. His present day mind is aware, watching, commenting. He can always compare the details and events with those of his current life. He is the movie's observer and its critic, and usually its star at the same time. And all the while, he can remain in the relaxed, hypnotized state. Hypnosis puts the patient in a state that holds great potential for healing by giving the patient access to subconscious mind. To speak metaphorically, it puts the patients in the magical forest that holds the healing tree. But if hypnosis lets the patient into that healing country, it is a regression process that is a tree that holds the sacred berries he or she must eat to heal. Did you understand this? So अगर hypnosis हमें एक state में ले जाता है जहाँ बहुत सारी potential है for us to heal. How? Because हम अपनी past lives में subconscious mind में जो stored है वहाँ जा पाते हैं. So अगर हम उस magical enchanted forest में जा रहे हैं जहाँ हमारी बहुत सारी past lives हैं और उसमें हमें एक past life दिखाई जाती है और वहाँ उस past life में एक ऐसा incident है जो हमारा healing tree है. अगर हम उस हिप्नोसिस में वो सेशन में वो हम उस पेड़ के पास जा पाए तो क्या होगा इस प्रोसेस में जो भी हमारे ट्रॉमास हैं या हम हमारे साथ कुछ क्यों हुआ वो जो हम इस लाइफ में लाए हैं उसको हम रिलीज कर पाए तो बिना किसी चीज के हम हील हो जाएंगे बिकॉज हमारे हमने देखा है ना पास्ट 8 books we've done 7 books we've done sorry 6 books we've done what's wrong with me ये 7th है in 6 books we've realized that people have healed by going into the past life and tapping into the memory so isn't this remarkable that is why hypnosis of past life regression is really important but ironically there are some people who have apprehensions and then they're scared ki kya hoga. But if we drop those apprehensions and if we go with an open mind, we will always find the answer to our question. Ask and you shall receive. That is the attitude we have. And Soham is a language that we talk about that. And when we do those midras, we are going to get answers from the universe. So I want all of us from today onwards to chant Soham in our morning session, in our meditation. Because now, with this book into healing, we are looking at healing ourselves.
And Soham is an absolutely powerful chant with the mudra and the breathing, if done correctly, will make us reach a divine state. It's absolutely magical. And we will be practicing that tomorrow. Kal, I will be simultaneously guiding us all. Day after onwards हम flow state में होंगे अपने आप हमें and जब हम धीरे करने लग जाएंगे we will start remembering that's beautiful, right? So we will also be healing at many levels. Back to the book. Regression therapy is the mental act of going back to an earlier time, whenever that time may be, in order to retrieve memories that may still be negatively influencing a patient's present life and that are probably the source of the patient's symptoms. Hypnosis allows the mind to short circuit conscious barriers to tap the information, including those barriers that prevent patients from consciously accessing their past lives. Repetition compulsion is a name given by Freud to describe the often irresistible urge to re dramatize or reenact emotional, typically painful experiences that occurred in one's past. In his papers on psychoanalysis, the famous British psychoanalyst Ernest Jones defines repetition compulsion as the blind impulse to repeat early experiences and situations quite irrespective of any advantage that doing so might bring from a pleasure pain point of view. No matter how harmful and destructive the behavior, the person seems compelled to repeat it. Willpower is ineffective in controlling the compulsion. Freud discovered that bringing the initial trauma to consciousness, cathartically releasing it, process therapists called abreaction, and integrating what has been left and learned is effective. Hypnotic regression therapy performed by a skilled therapist first puts the patient in a hypnotic state and then gives the patient the tools needed to bring in a hypnotic state and then gives the patient the tools needed to bring in an incident like this to light. So I'm sorry, I repeated a part. So I'll again read it so that it's clear. Hypnotic regression therapy performed by a skilled therapist first puts the patient in a hypnotic state and then gives the patient the tools needed to bring an incident like this to light. Often the incident occurred during childhood. This is standard psychoanalytical theory. But other times, as I discovered while treating Catherine, the initial trauma stretches backward much farther than that into past lives. I have found that about 40% of my patients need to delve into other lifetimes to resolve their current life clinical problems. Regression to an earlier period of this present day lifetime is usually fruitful enough for most of the remainder. For the first 40%, however, regression to previous lifetimes is key to a cure. The best therapists working within the classically accepted limits of the single lifetime will not be able to effect a complete cure for the patient whose symptoms were caused by a trauma that occurred for a previous lifetime. Perhaps hundreds or even thousands of years ago, but when past life therapy is used to bring these long repressed memories to awareness, improvement in the current symptoms is called swift and dramatic. A pattern of compulsive sexual acting out would be an example of repetitive compulsion syndrome. I know of a young man who's compulsively driven by a form of exhibitionism, especially of exposing his genitalia to certain women while masturbating in a car. This behavior is obviously dangerous and destructive. This young man has outraged women and he has been arrested several times. Yet, his destructive compulsion continues to occur. His therapist has traced the origin of his behavior back to sexual incidents that occurred between the young man and his mother when he was quite young. This mother used to fondle her son while she bathed him, and he would consequently have erections. Confusing, arousing, and disturbing feelings were elicited in this child. This feelings was extremely intense, and part of the young man's compulsion seemed to be a desire to recreate the intensity of these earlier emotions. Despite this excellent therapist's success in uncovering an early trauma, this man's therapy has been successful only in part and he suffers frequent relapses. Even though his behavior causes him to feel profound guilt and shame in addition to subjecting him to offer dangers, he experienced overwhelming urge to repeat it.
Based on my experience with over 300 individual past life regression patients, there's a good possibility that the reason this therapy has been only partially successful lies in the fact that the original trauma may have occurred in a prior lifetime. The scenario may even have been repeated in several lifetimes. Perhaps the most recent manifestation, the one experienced in this current life, is only the latest in a series of similar traumas, not just the most recent. Need to be brought to awareness. This then completing healing can occur. Many of my patients have recalled different traumatic patterns under hypnosis that repeat in various forms in lifetime after lifetime. These patterns include abuse between father and daughter that has been recurring over centuries, only to surface once again in the current life. They also include an abusive husband in a past life who has resurfaced in the present as a violent father. Alcoholism is a condition that has ruined several lifetimes, and one warring couple discovered that had been homicidally connected to the previous lives together. Many of these patients had been in conventional therapy before they came to see me, but their therapy had been ineffective or only partially effective. For these patients, regression therapy to past lifetimes was necessary to completely eradicate symptoms and to permanently end these recurring cycles of harmful, maladaptive behavior. The concept of repetition compulsion seems valid. However, the scope of the past must be enlarged to include past lives if uncovering the present lifetime's sources proves unsuccessful. I am certain that the young man is who's compelled to masturbate while driving needs to explore his past life realms to identify the traumas and to bring them into his current awareness. When the pathological foundation is still covertly present, the symptoms will inevitably recur. Only when it is brought to light can he really be cured. I have found that hypnosis combined with regression therapy plumbs the unconscious more deeply than do psychoanalytic techniques like free associations, in which the patient remains in a relaxed but conscious state while merely choosing the eyes, because it promotes a deeper strata of associations by tapping memory storage areas unavailable to the conscious mind. Hypnotic regression therapy offers many patients deeper and dramatically rapid results. The material tapped by past life regression therapy is in some ways like the powerful universal archetypes described by Carl Jung. Obviously, the material of past life regression therapy is not archetypal or symbolic, but actually memory fragments of the ongoing recurrent of human experience from ancient times to the present. Past life regression therapy combines the specificity and healing catharsis that is the best of Freudian therapy with the healing participation and recognition of deep symbolic meaning that is a hallmark of Jung. Regression therapy consists of much more than hypnotic technique. Before the hypnotic process can be initiated, a skilled regression therapist will spend a great deal of time taking a history, asking questions, getting answered, and going very specifically and in great detail into particular areas of importance. This increases the success rate of regression from about 50% to about 70%. And after the regression is completed, after the patient has emerged from the hypnotic state, it is then necessary to integrate the feelings, insights, and information the session has elicited into the current life situation. The integration requires considerable therapeutic skill and experience because the material evoked is often powerful and emotionally charged. Therefore, I do not recommend past life therapy done by a therapist who's not certified or accredited by traditional accrediting body, who does not have a degree such as MD, PhD, MSW, or other traditional degrees. Non-traditional past life therapists may be likely to let a memory evolve at its own pace and less likely to have the skills necessary to help the patient integrate the material. Experiencing a past life regression alone at home, however, is beneficial and relaxing in most cases. The subconscious is wise and will not provide the conscious mind with the memory it is not capable of assimilating. There's a slight risk of adverse symptoms such as anxiety or guilt, but these can be alleviated if
necessary by a visit to a trained therapist. An individual who has even a slightly adverse reaction while working alone will simply stop the experience. His subconscious protecting him, while an untrained therapist might try to override the subconscious and push that individual to continue before the client is ready. As a psychiatrist with a hectic clinical schedule, my main priority is to cure my patients rather than to validate their past life memories, although such validation is also extremely important. I find that actual past life memories are accessed and described by the patient in one or two patterns. I call the first pattern the classical pattern. In the classical pattern, a patient enters a lifetime and is able to offer a very complete level of detail about the life and its events. Although, almost like a story, much of the entire lifetime passes by, often beginning with birth or childhood and not ending into death. It is possible that the patient will painlessly and serenely experience the death scene and a life review, in which the lessons of the lifetime are illuminated and discussed with the benefit of the patient's higher wisdom and possibly by religious figures or spiritual guides. Many of Catherine's lifetimes are recalled in the classic regression patterns. Here is an excerpt of one of them, a lifetime apparently Egyptian, in which Catherine began by recalling a waterborne plague that had killed her father and brother. She had worked with the priests who prepared the bodies for burial. At that time, the memory began, and also an excerpt of it, Catherine was 16. People were put in caves, the bodies were kept in caves, but first the bodies had to be prepared by the priests. They must be wrapped, anointed. They were kept in caves, but the land is flooding. They say the water is bad. Don't drink the water. Is there a way of treating it? Did anything work? We were given herbs, different herbs, the odors, the herbs and the smells, the doors. I can smell it. Do you recognize the smell? It's white. They hang it from the ceiling. It's like garlic. It's hung around. The properties are similar, yes. You put it in your mouth, your ears, your nose, everywhere. The odor was strong. It was believed to block the evil spirits from entering your body. Purple fruit or something round with purple covering, purple skin to it. Is the purple skin a fruit of some sort? Tannis. What would that, how would that help you? Is that for the illness? It was at that time. Tannis, I repeated again, trying to see if she was talking about what we refer to as tannin or tannic acid. What in this lifetime has buried itself in your current lifetime? What do you keep coming back here? What is that that is so uncomfortable? The religion? Catherine quickly whispered. The religion of that time. It was a religion of fear. Fear? There are so many things to fear and so many gods. Do you remember the names of any gods? I see eyes. I see a black sort type of it. Looks like a jackal. He's in a statue. He's a guardian of some type. I see a woman or goddess with some type of headpiece on. Do you know her name? The goddess. Osiris. Cyrus? Something like that. I see an eye, just an eye, an eye on a chain. It's gold. Oh my God, they're talking about, wow, an eye? Yes, Hathor. Who's that? I'd never heard of Hathor, although I knew that Osiris, if the pronunciation was accurate, was a brother husband of Isis, is major Egyptian deity. Hathor, I later learned, was the Egyptian goddess of love, mirth, and joy. Is it one of the gods? I asked. Hathor, Hathor. There was a long pause. Bird, he's flat, flat, a phoenix. She was silent again. Go ahead in the time now to find your final day in this lifetime. Go to your final day just before you'd have died. Tell me what you see. She answered in a very soft whisper. I see people and buildings. I see sandals, sandals, sandals. There's a rough cloth, some type of rough cloth. What happens? Go to the time of your dying now. What happens to you? You can see it. I do not see it. I don't see it anymore. Where are you? What do you see? Nothing, just darkness. I see a light, a warm light. She'd already died, already passed over to the spiritual state. Apparently, she did not need to experience her actual death again. Can you come to the light? I asked. I am going. Can you look backward now to the lessons of their lifetime? Are you aware of them yet? No, she continued to wait. Suddenly, she appeared alert. Although her eyes remained closed, her voice was louder. I feel someone's talking to me. What do they say? Talking about patience. One must have patience. Yes, go on. The answer came from the poet master. Patience and timing. Everything comes when it must come. A life cannot be rushed, cannot be worked on a schedule as so many lives want it to be. We must accept that comes to us at a given time and not ask for more. But life is endless. We never die. We never really born. We never really born. We just pass through different phases. There is no end. Humans have many dimensions, but time is not
as we see time, but rather in lessons that are learned. The details of burial, the herb that was used to ward off sickness, and the statues of gods are all typical of classic regression. So is the wide span of time that the memory covers from 16 until death. Although Catherine did not remember the actual death experience here, she had recalled the death experience from this lifetime in a previous session. She did pass through it to receiving illuminating spiritual information on the other side. The second pattern of past life recall is one I call the key moment flow pattern. In key moment flow, the subconscious knits together the most important or relevant moments from a cluster of lifetimes, the key moments that will help elucidate the hidden trauma and most quickly and powerfully heal the patient. Sometimes the flow includes a between life review, and sometimes it does not. Sometimes the lesson or pattern is subtle and does not become clear until close to the end of the flow or when I specifically ask the patient what it is. Other times the pattern is telegraphed instantly by the pattern and flow of key moment memory. With some patients, key moment flow has a fragmentary quality that can expand either into a more detailed key moment flow or a classical pattern in later sections, according to the optimal flow of memory and healing for the particular patient as determined by that patient's subconscious. Frequently, key moment flows move dramatically and yet gently and peacefully from trauma to trauma, from death scenes to death scenes, as it weaves its own unblinking yet deeply healing form of illumination. Here are some examples of key moment flow, again from Catherine's case. These memories all come from Catherine's first past life regression session. There are trees and a stone road. I see a fire with cooking. My hair is blonde. I'm wearing a long, coarse brown dress and sandals. I am 25. I have a girl child whose name is Cleastra. She's Rachel. Rachel is presently her niece. They have always had an extremely close relationship. It's very hot. There are big waves knocking down trees. There's no place to run. It's cold. The water is cold. I have to save my baby, but I can't. She just has to hold tight. I drown. The water chokes me. I can't breathe. I can't swallow salty water. My baby is torn out of my arms. I see clouds. My baby is with me and others from the village. I see my brother. She was resting. This lifetime had ended. She was still in deep trance. Go on, I said. Do you remember anything else? I have on a dress with black lace, and there's the black lace on my head. I have dark hair with gray in it. It's 1756. I'm in Spanish. My name is Luisa. I'm 56. I'm dancing. Others are dancing too. I'm sick. I have a fever, cold sweats. Lots of people are sick. People are dying. The doctors don't know if it was from the water. I took her ahead in time. I recover, but my head still hurts. My eyes and head still hurt from the fever. From the water, many die. Clearly, in this key moment flow, the pattern is trauma experienced through natural disaster. The emotionally concentrated nature of key moment flow pattern may seem intense, but in my experience, reliving the trauma or death scene runs only a minimal risk of incurring a disturbing reaction within either regression pattern. In the hands of a trained therapist and even working at home alone, most people handle and integrate the memories without difficulty. They actually feel much better. The therapist can always instruct them to float above the death scene if they feel it necessary to observe without emotion, and their subconscious mind can always remove a patient from the regression experience. People can choose not to experience a death scene at all. There are always choices. But the intensity of past life therapy does not frighten those who experience it. Past life therapy that flows from key moment to key moment is a very practical, successful therapy modality, one in which the necessary connection between past life and present life may take place in perhaps less than 1 hour rather than in several hours. However, key moment flow tends to provide less validation for the patient that does not the classical pattern because its focus is on essence, not details. I myself cannot predict which of these patterns a patient will adopt. Both heal equally. Finally, not everyone needs to remember prior lifetimes through regression under hypnosis. Not every individual bears the weight of past life traumas or scars that are insignificant in the current lifetime. Often, what a patient needs is to concentrate on the present and not the past. However, I teach most of my patients self hypnotic and meditative techniques since these skills are most enormously valuable in day to day life.
Whether a patient wishes to cure insomnia, reduce high blood pressure, lose weight, stop smoking, augment the immune system to fight off infections and chronic diseases, reduce stress, or achieve state of relaxation and inner peace, these techniques can be effectively used for the rest of his or her life. Despite the benefits, there are times when patients will nevertheless decline hypnosis. Often the reasons are surprising. When I was a resident in psychiatry at Yale Medical School, a businessman was referred to me for treatment of his fear of flying. At that time, I was one of the few therapists at Yale who used hypnosis to cure monosymptomatic phobias, which are fears of one specific thing, such as flying or driving on highway or snakes. This businessman's job required a considerable amount of traveling. Since he would only use ground transportation, he clearly needed to overcome his fear. I carefully outlined the hypnotic procedure. I transmitted my confidence and optimism that he could be cured, that he would no longer be paralyzed by his fear. Not only would this cure greatly help his business prospects, I assured him, but he would be able to vacation at more distant and exotic places. His whole lifestyle and quality of living would improve. He looked pensively at me, frowning. Moments slowly passed. Why wasn't he more excited? No thanks, doc, he finally said. I'll pass on the treatment. This caught me completely off guard. I'd successfully treated many patients with similar symptoms, and none had rejected my help. Why? Why don't you want to be cured? Because I believe you, doc. You will cure me. I won't be afraid to fly. Then I'll get on that plane and it'll take off and then crash and I'll be dead. No thanks. I had no argument to counter this. He cordially left the office with his phobia intact, but he was undeniably still alive. I was learning more about the human mind, its resistance and denials. Wow. All right. Time for our chat today. I have so much to share with all of you. Ready for a session? Can I have your cameras on if possible? Hi ज्योति, अब कुछ भी बोल दो. तुम्हारा उस समय मैसेज मुझे एकदम से उस जोन में ले गया जिससे मैं निकलना चाह रही थी. नमस्ते प्रतिमा No, जी. Saji, I'm really feeling very sorry for Sunaina. Like, मेरे को अच्छा, लगा, okay, okay, sorry. आप मेरे लिए सॉरी बोल रहे हो कि आपने वो मैसेज डाला. नहीं नहीं, अथवा मैं हाँ, आई सो थैंक यू फॉर सेइंग व्हाट यू आर सेइंग. मुझे एक चीज बोलनी है आप सबको. मैंने सुबह मैसेज भी डाला. You few handful chosen people have been with me since Monday, since 4th of January, 4th of December when 3rd को सुनैना का हुआ and 4th से आप लोग हील कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप लोग की हीलिंग से बहुत फर्क पड़ा है उसको. मैं क्यों बोल रही हूँ बहुत क्लियरली बता देती हूँ. अब आप लोग को पता ही है व्हाट वर्ल्ड आई एम इन. सो जब सुनैना क्रॉस ओवर हुई है, सो बेसिकली 11:30 से उसके पैरामीटर्स डाउन होने शुरू हो गए थे. बट आप कुछ यू चांटिंग समथिंग ज्योति. yes, Ram. ओके, आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. Okay, so when Surena crossed over, 11 se her parameters were going down, her blood pressure was dipping. And my mother-in-law and Surena's Masi, Surena's Bua, and Surena's son, Subed, these three had gone to Nasik. वहाँ कौन सा मंदिर है? Ma, I think Kal Sapra. काल भैरव जी का मंदिर है शायद. हाँ, तो कहते हैं ना कि he is the puller of soul and all of हाँ, that. हाँ. तो वहाँ पूजा करने गए थे. अब वो लोग का पूजा शुरू ही हुआ 11 बजे और सुनैना उस समय का डिप होना शुरू हो गया. अब मैं बताती हूँ. अब आप लोग बोलेंगे यार पूजा करे तो शी शुड हैव रिवाइव्ड. नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट पूजा मेड सुनैना's वर्क इजी. अच्छा, सुनैना रियलाइज्ड शी इज अ सोल बॉडी से बाहर होती है. जब वो ट्रॉमा में होती है, आईसीयू में होती है, तो वो अंदर नहीं होती, वो बाहर से ऑब्जर्व कर रही होती है. अब सोल ने रियलाइज किया कि प्राची को तो विजन आ गया. अब 12-12 को तो ये तो ले आएगी. कुणाल को तो 100% चाहिए सुनैना वापस. प्राची को भी 100% चाहिए सुनैना वापस. ये दोनों और बच्चों को भी बिलीव है इन दोनों में. ये चारों मिलके मुझे तो वापस ले ही आएंगे. मेरे को अभी आना ही नहीं है. मेरा तो सोल का सर्कल ऑफ लाइफ इज ओवर. तो भैया कट लो. एक्चुअली दैट्स व्हाट हैपेंड. Okay. बिकॉज व्हेन आई डिड माय न्यूमरोलॉजी, सुनैना का जब एपिसोड हुआ था 3rd को, मैंने 4th को न्यूमरोलॉजी गई थी उसकी.
एंड फोर्थ को क्लियरली दिख रहा था कि 7th and 11th आर वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। एंड 7th को तो मतलब मुझे लगा था कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है 7th को, लेकिन मुझे पता था मिरेकल होगा। मिरेकल ये हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि शी इज नो लॉन्गर देयर, मतलब कुछ हमें उम्मीद नहीं है, आप अनप्लग कर दो। बट मेरे देवर ने बोला कि नहीं, हम अनप्लग नहीं करेंगे। फैमिली वॉज नॉट इन डिनाइल। माई जेठ जी, राहुल भैया, सारिका भाभी, ताई जी, they have seen my 17.5-year-old nephew go. They have seen my Tauji go. They have seen Kunal Bhaiya's first daughter go. Suved ke baad we had Navya. They have seen 3 close deaths. तो ये डिनाइल में नहीं थे ये लोग। इन लोग को पता था कि अब सुनैना में कुछ है नहीं। बट कुणाल भैया और मैं और सुवेद गायत्री, वी लाइक आएगी आएगी, शी हैज नो प्लान बी, आएगी आएगी, आना ही पड़ेगा। सो वी वाज इंटेंसली हीलिंग हर, एंड हमने मना करा कि हम अनप्लग नहीं करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा मिरेकल वो था। तो 7 निकल गई। 8-9 को हमको लगा कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। मैंने पूना जाकर पहले 8 को उसके क्रिस्टल्स लगाए। अच्छा, क्रिस्टल्स का पावर क्या होता है? जिस दिन आप लगाते हो ना, दैट्स डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पे मैजिक्स एंड मिरेकल्स एंड रिजल्ट्स आते हैं, राइट? अच्छा, डे 1 वाज 8th, तो डे 2 वाज 9th, डे 10 वाज 11th, sorry, 8th was day 1, 9th was day 2, 10th was day 3, and 11th was day 4. 4th को रिजल्ट्स आते हैं। अब आप समझिए क्रिस्टल्स की पावर। मैंने 3 क्रिस्टल्स लगाए थे। अब these 3 crystals have intensifying magical powers, like so magical I can't tell you. मैंने अपने सेशन में भी बताया था आप सबको कि when we working with these energies, the crystal energies speak, right? अब these crystal energies are speaking to you in a language which is known. एक सुगी लाइट लगाया था। इट्स अ पर्पलिश कलर ऑफ अ डिवाइन स्टोन क्रिस्टल। ये क्या करता है? ब्रेन बैलेंसिंग में हेल्प करता है। सुनैना का ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो हम सोचे थे ब्रेन बैलेंस होगा। एक ब्लड स्टोन लगाया था हमने, जो जिसमें ग्रीनिश ह्यूज, येलो ह्यूज, रेड ह्यूज होते हैं, जो हमारा ब्लीडिंग, ब्लड स्टोन ब्लीडिंग एंड हैमरेज को हेल्प करता है। और एक हमने स्टोन लगाया था कॉल्ड ओब्सिडियन। ये ओब्सिडियन मोर ब्लैक का होता है, थोड़ा सा इसमें ब्लू भी, डिवाइन ब्लू भी होता है। दिस स्टोन this stone is called a storm element stone. Storm element has to be used very, very carefully. But my teacher said, Sunena, at this juncture when she's on life support, she needs this stone. And she told me very categorically, Prachi, this stone can flip the energies which are holding her. One thing is, decision soul का होता है हमेशा। सोल ने डिसाइड कर लिया कि इनको जाना है तो जाना है, रहना है तो रहना है। हमारे यहाँ सुनैना एक उसमें थी, जंक्चर पे थी, थ्रेशोल्ड पे खड़ी थी, क्लिफ के। वहां जाऊं तो आगे, पीछे आऊं तो लाइफ। पीछे इसने क्या विजन दिखाया था आकाशिक में, मैंने आपको बताया था, ब्रिचा दास ने हील किया था कुणाल भैया को, दैट शी इज इन अ सर्कल ऑफ येलो सनफ्लावर्स, शी इज इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। दिस स्टोन हैज अ पावर टू ब्रिंग हर बैक। Only this stone has the power to bring her back. Or if the soul has chosen, I don't want to bring back, then flip her energy। जो ये storm चल रहा है उसके अंदर पूरा, उसको खत्म करके सामने क्लियर दिखाकर कि अब तुम्हारे पास क्लियर रास्ते हैं, अब डिसाइड कर लो। तो सोल डिसाइड्स कि मुझे सीधे जाना है, विच इज हेवंस अबव, या मुझे पीछे जाना है, विच इज लाइफ। सोल ने क्या चूज किया? फ्रीडम। अब सबसे बड़ी बात तो हो गई सारी। मैडम चली गई, 11 बजे डिप कर रही थी, 2 बजे करीब शांत हो गई वो, और मुझे बताया नहीं गया। और मैं उस अपना, मेरा नीज का आपको पता ही फिजियोथेरेपी चल रहा है, तो मैं चली गई अपने हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी करा के आई। मुझे गिल्टी हो रहा था कि मैंने वीडियो नहीं बनाया अपील के लिए, आप सबसे बात तो कर ली थी, बट आई वाज सो बिजी, कॉट अप इन सो मेनी थिंग्स। एंड मेरी एनर्जीज बड़ी अच्छी थी कि कल तो अरे मैजिक होने वाले हैं, अरे कल तो हम लोग ये करने वाले हैं। भैया ने इतना जरूर बोला था कि हम सुरैना को घर नहीं ला रहे, घर लाएंगे तो शील कोलैप्स, तो भाभी हॉस्पिटल में ही जो करना है करना है। मैंने ये भी वर्क कर लिया था कि भाई दे ऑल विल हील हर,
हम लोग ऑनलाइन सारा चैंटिंग करेंगे। एनीवे, वीडियो मेरा बना 2:30 बजे करीब, आई थिंक मैंने तब सबको वायरल किया होगा। कोई भैया का परमिशन था कि भाभी गो ऑल आउट। मेरे भैया को वीडियो भेजे हैं, फ्लायर, वीडियो, जूम कॉल का मैसेज। 2:45 बज रहा होगा शायद। भैया का जवाब आता है, ओम शांति सुनैना। अब इसका मैं लॉजिक बताऊं, हम लोग क्रिंज करेंगे, ओ नो, मौका नहीं मिला करने को। सुनैना ने मौका दिया नहीं। सुनैना बोली, डे 4 है, क्रिस्टल्स का मैजिक वर्क करेगा। नाउ आई कैन सी क्लियरली, अगर ये लोग कर लिए 1212 का पोर्टल, तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। मुझे फिर इस लाइफ में फंसना ही पड़ेगा, मुझे नहीं करना है। आई विल चूज दिस पाथ एन ऑनवर्ड जर्नी। मैडम चलिए। शी वेंट। भैया का मैसेज आ गया, सुवेद का मैसेज, ताई मॉम हैज गॉन। गुड्डू इज सुनैना's younger सिस्टर, उसका मैसेज आया, सुनैना हैज लेफ्ट अस। अब गुड्डू की जर्नी देखिए, उसका भाई शिवांशु गया अक्टूबर 2017 में, सुनैना गई दिसंबर 2023 में। 3 बहन भाई अकेली बच गई। जब मैं यहाँ 8th 7th 8th 9th को आई हूँ, मेरा कनेक्शन विद गुड्डू बिकेम दिस, विद सुप्रिया बिकेम दिस, with Supriya, with Suved, and with Gayatri. I'm telling you, I'm not kidding. You have been part of my journey with Sunaina. I have loved Sunaina. I've loved Sarika Bhabi also. But मुझे नहीं पता था कि I love her. यहाँ जब उसका हैमरेज हुआ, न्यू एनर्जीज केम अप। आकाशिक में चैनल हुआ, ऋचा दास ने बोला कि आई वॉज हर सिस्टर इन वन बर्थ लाइफ। तो मुझे जब वो जा रही है तो आई एम नॉट एबल टू टेक इट, बिकॉज मेरा ट्रॉमा एग्रेवेट हो रहा है, ऋषि भी चला गया था। सो आई एम गेटिंग ट्रॉमाटाइज कि दोबारा नहीं चली जाए। तो मैं वो डेस्परेट थी कि ऋषि के टाइम पे तो बचा नहीं पाई, सुनैना को तो बचा के रहूंगी, मेरी आई एम नॉट गोइंग टू लेट हर गो। बट सुनैना चोज टू गो। अब मैं कैसे बोल रही हूँ विद कन्विक्शन, मैं आकाशिक रीडर्स में हूँ विद माय टीचर। आप लोग भी उस ग्रुप में आने वाले हो अब वेरी जल्दी। इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड। मैं वहां हीलिंग के लिए डाल रही थी सब कुछ। फिर मैंने मैसेज डाला कि सुनैना शी क्रॉस्ड ओवर, आप लोग को मैसेज डाला वही वहां डाला। अब मैंने मैसेज डाला करीबन आई थिंक अबाउट 4ish। मैं भी टाइम ले रही थी समझने प्रोसेस करने में। प्लस द मिनट मालूम पड़ा सुनैना इज गॉन, मैं तो भैया अपना सूटकेस नीचे से गई, बेसमेंट में स्टाफ था नहीं, मैं तो खुद गई, सूटकेस लाई, अपना पैकिंग ब्लाइंडली शुरू कर दी, किट डालना, ये करना वो करना। एंड आई टोल्ड प्रशांत कि मुझे पुणे भेज दो तुम कैसे भी। तो प्रशांत बोले टिकट ही नहीं मिल रही। कैन यू बिलीव, दिल्ली से बॉम्बे 50 फ्लाइट जाती है, एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। बॉम्बे से पुणे कितनी फ्लाइट जाती होंगी, एक फ्लाइट में एक सीट नहीं। प्रशांत बोले प्राची पॉसिबल नहीं है, अपने बाद में चलते हैं, ऐसे बात का तो मतलब ही नहीं है, मैं तो अभी निकलूंगी। एंड मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को दोनों को फोन किया, अपनी बहन को किया कि भाई फाइंड मी टिकट। माय छोटे ब्रदर इन लॉ से, दीदी एक फ्लाइट बॉम्बे की मिल रही है, मैं करा देता हूँ, फिर आप गाड़ी से चले जाना, आज वहां पे चले जाओ गाड़ी से, नो प्रॉब्लम। टिकट कितनी, 30,000 रुपीज की। तो मैंने कहा आप करा दो, जस्ट गेट इट डन। बट कराते कराते वो भी बिक गई, जैसे दीदी अब कोई टिकट नहीं है। बट मेरे पास एक ऑप्शन है, वी बुक 2 फ्लाइट्स। वी फर्स्ट टेक यू टू जयपुर, 2.5 घंटे वहां वेट करो, और फिर आप पुणे जाओ। आप गाड़ी में जाओगे तो भी आपको 3-4 घंटे लगेंगे। दिस इज बेटर, आप एयरपोर्ट पे अपना और भी चीज कर सकते हो। ऐसे खगेश आप भेज दीजिए मुझे, खगेश को में टिकट नहीं 20,000 रुपीज का चीपर भी है, ऐसे बहुत बढ़िया, जो सेंड मी। ही बुक द टिकट। आई डोंट, प्रशांत ड्राइवर भी नहीं था, आई कुड ड्राइव ऑब्वियसली बिकॉज़ आई टू कम बैक। आई सेड प्रशांत आप टैक्सी कर दो मेरे लिए, मैं तो ही इज लाइक श्योर, आई सेड आई एम श्योर। मेरा तविशी छोटी मेरी स्कूल से आई है 3:40 एंड शी सॉ माय एंटायर पैकिंग डन। ऐसे बेटू ऐसे ऐसे हो गया, सो नैना चाची क्रॉस्ड ओवर, आई हैव टू बी विद सुवेद एंड गायत्री। ऐसे मुझे लग रहा है कि आप यहाँ, चाचा चाची कैसे है, क्या है, आप एक बार ऑर्गेनाइज कर लो, यू वांट टू शिफ्ट टू अ फ्रेंड्स और यू वांट टू स्टे हियर, बिकॉज़ माय देवर देवरानी आर लाइक रियली अमेजिंग पीपल। She and they have my back like this. They treat Tavishi Muskan like their own, so I know that she'll be taken care of. मैंने भैया प्रीति से भी बात नहीं करी, मम्मी से भी बात नहीं करी, बस प्रशांत और मेरा बात हुआ, खगेश टिकट कराई। मैं गाड़ी में बैठी, तभी लास्ट मेरी मिनट फाइनल पैकिंग करी। शी वाज चेकिंग विद मी, आपने लैपटॉप चार्जर रख लिया, आपने मोबाइल चार्जर रख लिया, आपने ये रख लिया, आपने वो रख लिया, करके वी फिनिश अ पैकिंग, सैट इन द कार, पहुंची हूँ। मैं गेट पे पहुंची हूँ एज द लास्ट वन टू काइंड ऑफ बोर्ड द फ्लाइट एंड रीच जयपुर।
जयपुर पहुंची, 2.5 घंटे का लेओवर था, बट वो बन गया 3.5 घंटा। टाइम वॉज फ्लोइंग, सामान आराम से मिला मुझे, सब हुआ। मैंने, अब बताती हूँ आप लोग को, 9 दिन से कुछ खाया नहीं था, एक अन्न का दाना नहीं खाया था। क्यों? बिकॉज मुझे जो गाइडेंस आई थी अंदर, कीप योर बॉडी क्लीन, यूल बी एबल टू कनेक्ट एंड यूल बी एबल टू हील हर मोर। मैं कहा मैं कुछ भी करूंगी इसको बचाने के लिए। संडे का मैंने ब्रेकफास्ट खाया था, इडली वड़ा का ब्रेकफास्ट था। 3 तारीख को 1:15 बजे खबर आई, सुनैना का ऐसे हैमरेज हुआ। नो लंच, नो डिनर, आई जस्ट एंड हैव। एंड मेरे घर में क्या है, मेरा जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चला था, जो डिप्रेसिव स्टेज चला था, तो मैं बहुत बार मील अपने ऊपर के फ्लोर में खाती थी अकेले, या अपने कमरे में खाती थी। तो फिर मैं मम्मी को बोलती, मैं मम्मा पूछना बंद कर दो मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, माई फैमिली इज टू टू केयरिंग, ये खा लो बेटा वो खा लो, ऐसे जस्ट लेट मी बी। तो जब मैं लेट मी भी बोल दिया, नोबडी नोज ना क्या खा रही है क्या नहीं पी रही है। भाई स्टाफ और मेरे अंदर की बात है। हाउ विल माँ नो मैंने खाना नहीं खाया, हाउ विल प्रशांत नो मैंने खाना नहीं, प्रशांत आदि डिनर खा ली, हाँ 6 बजे खा लिया। अब मैं बताऊंगी कि नहीं खाया तो फिर ड्रामा, कुछ खा लो ये कर लो, आई डोंट वांट। सो एनीवेज, एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, इट माय एनर्जीज आर वेरी हाई। मैं कभी भी कोलैप्स नहीं हुई, हाय बॉडी में खाना नहीं। ये सेम चीज हुआ था 9 दिन का एक बार पहले भी। प्रतिमा जी, यू मे रिमेम्बर, जितेंद्र जैन माय आयुर्वेदिक टीचर टोल्ड मी कि भूख लगे तो खाना खाओ। मैं कहा मैं बिंज ईटिंग करती हूँ, वो Yeah, I डिप्रेशन का। remember. Hmm. उस दिन भी, उस समय मैं गई थी इसकी बर्थडे पे, अपनी बॉम्बे की है ना, शैलेश एंड अरे हाँ, अलोना, लोना, अलोना. अलोना का बर्थडे था, तो मैंने सरप्राइज Hmm. किया था इसको, शी इनवाइटेड मी, मैंने कहा आई कांट Yeah. कम। फिर आई रियलाइज कि सब लोग जा रहे हैं अपने 1-to-1 संघा वाले, तो मैंने कहा चलो लेट मी सरप्राइज, आई बुक टू लास्ट मिनट टिकट एंड आई वेंट देयर। तो ये लोग बड़े शौक थे, मैं कहा डे 8 हो गया, बोले कुछ खाना नहीं खाया, मैं कहा नहीं कुछ नहीं खाया। सो माई बॉडी इज काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। अब सुनैना क्रॉस ओवर हुई, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 घंटा में मैं बैठी हुई हूँ, मैंने पहला डोसा खाया वहां पे, यू नो, एंड छाछ पी, एंड आई जस्ट सेड कि सुनैना आप शांत हो गई है, अब मैं खा सकती हूँ, बिकॉज मैंने वो लिया था कि आई हैव टू रिवाइव हर बैक। एंड बज रहा होगा उस समय, 7:30 बज रहा होगा। 8 बजे, विश्वास करोगी, मैं भेजूंगी आपको स्क्रीनशॉट्स, मेरे आकाशिक ग्रुप में दिस somebody called दीपिका, वो अमेरिका रहते हैं, शी मैसेजेस टू मी, मैं पढ़ के बताती हूँ। इट इज एब्सोल्युटली मैजिकल जो होता है ना लाइफ में, मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है। और मैं तो इस वर्ल्ड में बहुत नई हूँ अभी भी, आई एम सो न्यू। शी राइट्स एट 8:09, एंड 9 सुनैना के साथ बहुत कुछ जर्नी में, 9 दिन का सफर रहा उसका, मतलब बहुत कुछ था। Hi, I just had a visit from the departed soul. She would like to communicate with her husband. Not sure if he will be willing to receive this. You decide, else I can just work with her to help her move on. For energy exchange, you could choose that you can do my Akashic reading or healing if this works for you. हमारे आकाशिक में यही है कि आप एक दूसरे को चार्ज नहीं करते हो, आप एक दूसरे के लिए फ्री रीडिंग करते हो, एंड यू हील ईच अदर, यू डोंट चार्ज द सेम कम्युनिटी, जो आप लोग के साथ भी होगा। It's not my most favorite thing to do, but the souls keep coming to me, so I thought I'll offer. मैं, मुझे पता ही नहीं कैसे चैनलिंग होती क्या होता है, आई हैव नो आइडिया। मैं उसको लिखती हूँ, yes please, I've shared this message with my brother-in-law, can I receive on his behalf? मैं कुणाल भाई का नंबर भेज दिया, can you tell भैया that you are from Richa and my Akashic group and give him the message. तो मैंने उसको लिखा, how does one give it in person or call or message or do you open Akasha? तो कहती है, I'm on a call right now, can I speak to you after 30 minutes? I said, yes please. She called me up at 9:22 for 46 minutes, Jyoti ji and Pratima ji. She channeled. Channeling में क्या आया है, उसने अपनी बेटी को एक सुरक्षा कवच देना था, गायत्री को, जो 13 साल की है। उसने दिखाया ब्लैक धागा, दुर्गा माता। उसने बोला कि गायों को ये पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गायों बोली तो वो गायत्री बोलती थी, मेरे मन से गायों निकलता है, कि 3 साल के लिए उसका बहुत टमल्टस टाइम है आगे। फिर उसने मुझे बोला प्राची को, कि मेरी बेटी को हैंड होल्ड करना, हील करना, रहना उसके साथ। फिर उसको बहुत अपनी माँ की बहुत चिंता थी, तो मम्मा मम्मा के लिए बहुत उसने, यू नो,
सदरपुर वाले बड़े गुरुजी का ऑल दैट, शी सेड कि वो ऐसे ऐसे हैं, बॉल्ड हैं, बॉडी में नहीं है, वहां जाओ उनको पूछो, मम्मा को निकल, दो दो बच्चे लूज करना माँ के लिए बहुत बड़ी बात है, बोली वो पैसिफाई करेंगे। फिर गायत्री के लिए कुछ और भी दिखाया, बंक बेड, जिनको लड़की के बारे में बताया, अपने हस्बैंड की दो तीन चीजें बताई कि भाई ऐसा ऐसा है कि आपको लगे कि मैं हूं, कोई और नहीं है, तो इनसे क्या मतलब, ये आप ही समझ पाओगे। तो हम लोग नहीं समझ, एक चाबी का छल्ला, उसके बालों का कुछ, फिर भैया के लिए कुछ वो था, मेडिसिन के लिए कुछ था, उनकी फिटनेस के लिए कुछ था कि ऐसे ऐसे करना है, कुछ उनको मैसेजेस दिए उसने। उसके बाद फिर मदर के पास चली गई, फिर देखा कि मम्मा को गुरुजी संभाल रहे, शी इज फाइन। अब उसने मुझे क्या बोला, प्राची, मेरे लिए कि आई शुड नर्चर हर, गायत्री contribute in her life, asking me to be with her as next 3 years are tumultuous for her. She needs to be grounded and I shall help. Take care in the age of 17 and 19 to ground her, to be lending an ear to her, to just be around her. She said that uh, she has become light and she wants the 13-day rituals to be done. She's light now, bright light now. She's very easy and she's very thankful to everybody in the life of all of us who have contributed towards her, to that helped her passage go very easily, जिसमें हम सब भी आते हैं। बिना जाने आप लोग ने किया, आप लोग को तो बहुत ही पुण्य मिला। एंड बाकी भी जो 4.5 लाख कहीं कोई जाप हो रहे हैं, कहीं 2.5 लाख कुछ जाप हो रहे हैं, कहीं हवन चल रहे हैं, कहीं वैदिक पाठ चल रहे हैं, hundreds of people have worked on Serena because 45-year-old की young, vibrant, gorgeous लड़की, जिसकी पूरी लाइफ कंप्लीट है, ब्यूटीफुल है, इतनी सोशल है, उसके कितने लवर्स होंगे दुनिया में, लविंग बींग्स होंगे। एंड मम्मा लोग भी वहां गए काल भैरव जी के मंदिर में, तो उसका पैसेज सबने इजी किया। और उसने बोला, आई एम वेरी सॉरी फॉर कॉजिंग पेन टू द लव्ड वंस ऑफ मी लीविंग, बट आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस, आई एम वेरी वेरी लाइट। उसने मुझे क्या मैसेज दिया, प्राची, I'll communicate with you through a feather. When a feather shows, you'll know कि it's me, a white feather, she says. उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने इमोशंस को हमारी कम्युनिकेशन के बीच में नहीं आने दूं, बिकॉज आई एम अ इमोशनल बीइंग। मेरे तो आंसू टप टप करते हैं, मैं किसी के साथ भी कहीं सगी हो जाती हूँ, मतलब आई एम लाइक दैट। शी टोल्ड मी कि इमोशंस को बीच में मत आने देना भैया, जब हम क्या चैनल करेंगे। एंड शी टोल्ड मी दैट अगर आपके शोल्डर में यहाँ लेफ्ट टिंज होगा, तो मतलब आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। And she asked me to cocoon the two kids, to keep healing them with love. And she says, I know love is flowing in you for them too much, so wrap them both in a bubble of energy that they'll absorb it and keep healing, healing, healing. Mother them. Ultimately, they will have joy that their buddy mom is around them. And the Akashi reader says there's beautiful energy in her presence. Can you imagine? Now उसके बाद तो मेरी healing हो गई in many ways. कि she chose it, भैया. And then I realized ki why, before coming only, my love for my children is so much as if I've given them birth. Like I'm with them in the with the Kunal Bhai and Suved Gayatri, जैसे मेरा कोई गया है, मेरी बहन गई है ना, with मेरी बहन गई है, right? Because and with Supriya, the four of them. So I was like so much. And मैं आपको एक फोटो भेजूंगी, I'll send you this message also. मेरे सूटकेस पे इफ यू कैन सी, यू नो, मैं वहां बैठी हुई थी, चार्जिंग पॉइंट था वहां पर, तो मेरे सारे मोबाइल लैपटॉप चार्जर थे, मेरे सूटकेस पे, मेरे हैंड सूटकेस पे, सॉरी नहीं, ये एक फेदर आके बैठा एयरपोर्ट पे। एंड दिस फेदर इज अ डिवाइन फेदर, थिक सॉलिड, कभी मैंने ऐसा फेदर नहीं देखा। एंड इस समय चैनलिंग हो रही है 46 मिनट्स दीपिका की। अब ये नहीं तो क्या, और मैं सोची, फिर मैं, और टाइम हो गया फ्लाइट बोर्ड करने का, मैं कहा चलो फटाफट अपना सब निकालो, एयरपॉड चार्ज हो रहे हैं, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, आईपैड, मोबाइल चार्ज हो रहा है, सब सब निकालो। मैं, ये चार्ज हो रहा था फोन, मैं तो अपने एयरपोर्ट से बात कर रही थी, और मैंने एयरपोर्ट केस चार्ज कर रही थी। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हेलो। हाँ विदा चाची, बोलिए, प्रणाम। जी, मैं सेटअप कर लूंगी चाची, आप बिल्कुल मत आए, आप भेज दें, मैं सेटअप कर लूंगी। जी, ठीक है, चल। उपमा, चटनी, इडली सांभर और क्या बोले आप, छोटा उत्तपम, हम सेट कर लेंगे, आप भेज दें प्लीज। पक्का चाची, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
जी चाची, ऑल राइट। मैं ठीक है चाची, थैंक यू। हाँ चाची। चाची बहुत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि 25 से ऊपर होंगे। 30 इडली बहुत होगा, कोई उत्तपम भी आ रहा है और वो भी आ रहा है, कमती पड़ेगा तो हम लोग फोन कर देंगे, नहीं चाची इतना ही बचा है। एक 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 एक- हाँ, आप बस बनवा दीजिएगा। हाँ उतना भेज दें चाची, उतना तो चाहिए होगा। 20 क्या, 25 भेज दें। और बाकी उपमा का कैसरोल, 2 कैसरोल। हाँ। ओके चाची, प्रणाम, थैंक यू। सो एंड वेयर वाज आई, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? हाँ, सो बस मैं सोची कि मैं फेदर को उठा लूं, अपना रख लूं कि भाई इतना सुंदर फेदर है मेरा। मुझे उस समय तो आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड क्या हो रहा है। मैंने फेदर को रखने के लिए उठाया, एंड प्रतिमा आंटी, वो फेदर उड़ के चला गया। आई एम सीइंग ऊपर जा रहा है, उसके बाद दिखना बंद हो गया। नो फेदर। आपका आवाज नहीं आ रहा है, एनीवेज। फिर क्या हुआ, मैं फ्लाइट में चढ़ी। फ्लाइट में मैं एकदम एग्जॉस्टेड थी, सोई नहीं हुआ। आई सेंट माई रिकॉर्ड टू ऑल ऑफ यू, ऑल राइट। नॉट स्लेप, माई फ्लाइट में क्रैश्ड। मैं उठी, घर गई, ताई जी लोग मिले मुझसे रात को 1:30 बजे। मिली, मैंने हक किया, उनको बताया। एंड ताई जी बोली, यूर अ वेरी प्योर सोल, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फुल हार्ट एंड यू केम फॉर हीलिंग फॉर 1 डे एंड ऑल दैट। ऐसे ताई जी, दिस इज माई कॉलिंग और वट एवर। अब 1:30 बजा था, प्रशांत 5 बजे आने वाले थे। मेरे को तो नींद आनी नहीं थी, मुझे पता था। तो मैं अपना एक बुक ले ली, एंड ये बुक भी कौन सा है, आनंदा आश्रम से मैंने खरीदा था। हाउ टू बी अ चैनल, पतला सा बुक। तो मैंने वो बुक उठाई, मैं सुनैना के पास बैठ के, बहुत मुश्किल था उसके साथ बैठना, बट वो ना, वो फ्रिज वाले कॉफिन में थी, बिकॉज रात भर उसको प्रिजर्व हाँ। करना। बहुत चिल्ड कॉफिन था, और उसका बहुत सुंदर सा ऑल्टर सेटअप हुआ हुआ था। मैं वहां बैठी, अपना बुक पढ़ रही थी। 3 घंटा तो कोई मैडम का कुछ कनेक्शन नहीं था। अब उसको पता है कि वेरी फॉन्ड ऑफ प्रशांत ऑल्सो। प्रशांत आए, मैंने प्रशांत को सब कुछ बताया कि प्रशांत, उनको मैं पैसे मैसेज कर चुकी थी। प्रशांत बोली समझ में नहीं आया, उनको सब मैंने दोबारा बताया। अब प्रतिमा आंटी, मेरे यहाँ दर्द शुरू। तो मैं बोली बहुत बॉडी दुख रही है, सोई नहीं हूं ना, इसलिए माई बॉडी इज गिविंग अप नाउ, बहुत दर्द हो रहा है। ये दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। यहाँ चटक 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 शुरू हो गई। मैं बोली पता नहीं क्यों यहाँ नर्व फड़क रही है, क्या हो गया, क्यों ऐसे हो रहा है। उनको भी समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। फिर मैडम की वो इलेक्ट्रिक, जो था, जो चिलिंग वाला कॉफिन था, एक लड़ी गिरी फूल की, 2 लड़ी गिरी फूल की, 3 लड़ी गिरी फूल की, चौथी लड़ी बोले बुला रही है तुमको। ये चड़क चड़क ओह था, तुम्हारा वाह। मैसेज था, तुमने अभी बोला था। मैं कहा ओहो, बत्ती जली मेरी। मैं कहा, आपको समझ में नहीं आया। मैं सोच रही हूँ कि लड़ियां क्यों गिर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है। देन आई सेड, सुने ना क्या बोलना, आई कांट कम टू यू, आई कांट सी यू लाइक दिस। नहीं आओ। मैं हिम्मत बंधा के गई उसके पास। भाई अभी बैठने में इजी था, क्यों, क्योंकि स्टील का कॉफिन था। कॉफिन था। इलेक्ट वो है एसी वाला, तो आई डोंट हैव टू सी हर, ऊपर से दिखती थी सिर्फ, ऊपर तो मैं जा नहीं रही थी। मैं गई, मैं देखी उसको, मैं बोली क्या है, बोलो। तो बोली प्रॉमिस ना, बच्चों को आप संभाल लोगे ना। वो उसकी लैंग्वेज वैसी थी। मैं कहा बेबी, हाउ डू आई प्रॉमिस यू, आई एम नॉट द फर्स्ट लाइन, आई एम द फर्स्ट कजन। मेरे पहले ताई जी हैं, सारिका भाभी हैं, कुणाल में तो ऑब्वियसली फादर है, एंड गुड्डू है, सुप्रिया है। मैं तो बाद में आती हूँ। नहीं, यू प्रॉमिस मी, यू आर द बड़ी माँ। आई सेड आई कांट प्रॉमिस यू, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। फिर मैं जाके अपना बेड पे बैठी, आई मीन सोफे पे बैठी। कैन यू इमेजिन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी। I can't believe, it's I really amazing. हाँ, It's हाँ। just Really can't believe amazing. Yes, आज इसको beyond. ना, कि चली गई लड़की, एंड शी सेड मेरा लाइफ बाप रे। कंप्लीट हो गया। एंड शी सेज कि मुझे सबका ठीक है, सुवेद भी आगे बढ़ जाएगा, बट दोनों बच्चों को आप एनवेलोप कर लो। एंड गायत्री को मैक्सिमम जरूरत है, कवच का बच, क्या क्या ये लड़की बता के जा रही है। एंड अच्छा, और क्या बोली, 13 दिन तक मैं कम्युनिकेट करूंगी विद दीपिका। आई चैनल, मुझे और कुछ ज्यादा करना होगा था। एंड भाभी आपको मैं ऐसे टेंशन से मैसेज दूंगी, पर अभी तक नहीं, जब तक जरूरत पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूं इसके आगे, अगर ये नहीं है एक प्रमाण की शी इज देयर, और क्या है। और कल जब सुनैना Absolutely, का Marvel. कुछ हुआ, जब इतना कुछ होता है ना अपने मारवाड़ियों में, उफ। मैं तो उसके बाद मुश्किल से सीढ़ी चढ़ी हूँ,
I collapsed in my bed. Lights out. रिचा आए हीलिंग देने के लिए या मुझसे मिलने के लिए, फोन पे फोन आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं, आई एम अनकॉन्शियस. इतना ट्रॉमा टॉर्चर हुआ था टू सी Yeah, हर. you went through so वो much. एम्बुलेंस में बैठी या नहीं बैठी मुझे पता ही नहीं कुछ. आई कोलैप्स्ड. बट ठीक है, अब जब उसका मैसेजेस आता है, अब आई एम लाइक ओके ठीक है, इट्स फाइन, शी इज इन अ हैप्पी प्लेस. Absolutely. सो बट आई वांट टू अगेन थैंक यू ऑल. आप लोग थे, मुझे ढाढ़स बंधा, हम लोग हीलिंग दे पाए, आज उसको फाइनल बाय बोल दिए. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आत्मा नमस्ते टू ऑल फॉर बीइंग इन माय जर्नी विद सुनैना इन हर थिंग. इन अभी भी आई नो शी इज हियर, सुन ही रही है, पता ही है मुझे, अभी भी आप लोग के साथ ही है, फक 100%. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप लोग को व्हाइट फेदर्स दिखेंगे तो समझ लीजिएगा सुनैना इज थैंकिंग यू ऑल. बोलिए How ज्योति. sweet. I Wonderful. recently, I'm on the terrace right now. I recently saw a white pigeon. मेरे को लगा मैं white pigeon क्यों दिखा अभी? Generally जल्दी से दिखता नहीं है. देख लो. And I was wondering, वो मेरे को क्यों दिखा अचानक से white pigeon? अब तुम देखोगे थोड़ी देर के बाद तो कोई फेदर गिरा हुआ भी कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं ना अपने आप आ जाएगा. Which means Sunaina is thanking you. I'll be really conscious today. And one more thing, जैसे आप बड़ी माँ बोल रहे थे, like I am the elder one in this house. So मेरी देवरानी के बच्चे, like not joking, they love me more than they love their mother. Like and they call me बड़ी माँ. I am their बड़ी माँ. मेरे बच्चे ये बड़ी बोल सकते माँ, हैं बड़ी चाची माँ, बड़ी माँ. चाची चाची They के लिए बोल keep on सकते हैं. telling me, तो मेरा बच्चा भी मुझे बड़ी माँ ये, बड़ी माँ वो. so my I was देवर feeling so overwhelmed. हाँ, तो वो मुझे Thank बड़ी you. बोलता है. बट अगेन जो आप बोल रहे हो ना, माय गर्ल्स विल सी द सेम फॉर द चाचाची. द चाचाची लव अस मोर देन आवर पेरेंट्स. तो भैया प्रीति, प्रीति का मतलब लव, सिद्धार्थ का मतलब Yeah. गौतम बुद्ध. मेरे बच्चों की लाइफ में लव एंड लाइट है वो दोनों. सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स हैं उन लोग के. सो जैसे आप बोले ना दे लव यू मोर, आई एम नॉट सरप्राइज बड़े हो कि बोलेंगे लव चाचाची मोर, एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज आई नो चाचाची रियली लव देम. सो यू नो, बट थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस जर्नी. मैं बहुत रोई, बहुत रुलाया, बट अब वो अच्छी खुश है तो मैं भी खुश हूँ. Yeah. That's the best way to let them go, peacefully. गई कहाँ है, 13 days बोली ना, हाँ, मैं गई का. रहूंगी आसपास. Absolutely. हाँ, बोली मैं रहोगी. इतनी Yes. शौकीन थी प्रतिमा जी फैशन के लिए, मेकअप के लिए, कपड़ों के लिए. अभी भी वो 13 दिन मेरा रिचुअल्स करना, अभी भी उसको करवाना है ये सब तामझाम. शौकीन बच्ची लड़की है एकदम. I have a friend in Pune. I had asked her about her. हाँ. What? So she said everyone in Pune knows her, and everyone is, praying somewhere or the other because she's so popular. She told मैं me बोली this. पूरी उसने बताई मेरे को, and even she was very much praised for your Taiji. या उर्मिला जी की क्या नाम नहीं, बताया? निर्मला जी, निर्मला जी. निर्मला जी, right? तो हाँ, ताई she जी, said. अच्छा ताई जी के लिए प्रतिमा जी, जब मैं सगाई हुआ था ना, मेरा मन था इनको बोलूं कि कैन आई कॉल यू बड़ी माँ. बट नहीं नहीं, बहू भी नहीं बने हो, घर में पॉलिटिक्स है नहीं है पता नहीं. मेरी हिम्मत नहीं उनको बोलेंगे कि कैन आई कॉल यू, बिकॉज मेरी 3 ताइयां और हैं. आई एम लाइक कोई ऑफेंस नहीं ले ले, आई कांट से दिस. तो मैं चुप रह Yes. गई. टुडे आई डिसाइडेड आई एम गोना टेल हर कि आज से आप ताई जी नहीं है, आप मेरी बड़ी माँ है. बिकॉज Yeah. मेरे मन के अंदर से आ रहा है कि आई लव हर, लाइक आई रियली लव हर. सो आई एम सेइंग अब तो मैं बड़ी माँ बोलूंगी, उनको बोलूंगी कि भाई आपकी 2 बेटे हैं, आपकी मैं बेटी बन रही हूँ, यू माय बड़ी माँ. बिकॉज आई फील सो मच ऑफ लव फॉर हर. एंड ताई जी, यू राइट, इज सुपर डुपर इंस्पिरेशनल. दोनों Yeah. बहू वो लाइक, आई मीन ताई जी Yeah. इज सो थैंक यू. दिस जर्नी हील्ड मी अ लॉट बिकॉज एक मेरा आप सोल फैमिली है, तो मैं आराम से बिना फिल्टर्स के शेयर भी कर पाए आप लोग के साथ. Absolutely. मीन्स अ Absolutely. लॉट टू मी. यस But this माधुरी जी, Akashing reading is too much. आप इतना करिए कुछ ना. बता देती है. मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप सब जब हीलर्स बन जाएंगे, हमारी जैमिंग ही अलग होगी, हम एक दूसरे के सेशंस करेंगे, कितना मजा आएगा. आई डोंट नो, आज रितु नहीं आई तो उसने, हमने उसको बोला नहीं था, रितु पक्का आती. रितु बताएगी फिर क्या हुआ, उसने रिचा से क्या बात करी क्या नहीं करी. आई टोल्ड रिचा कि जस्ट फॉर माय सोल कम्युनिटी हम एक सेशन करेंगे, नॉट फॉर एनी आउटसाइडर्स. एंड आई सेड आई विल कम बैक एंड डू द सेशन अगेन बिकॉज माय पीपल विल बी देयर. अभी Wonderful. साथ लंबा है हम लोग का, बहुत लंबा है. Yeah. Good.
मैं आई एम तो लाइक कि मेरे को आप सोल सिस्टर की तरह मिल गए। आई एम नॉट वेरी मच एक्सप्रेसिव, बट यू डोंट इमेजिन कि मेरे को एक वैक्यूम था मेरी लाइफ में कि somebody should be with me always. I always imagine you whenever I am in tough time, और मेरे I am in peace. I am very much attached. Very Thank much, yeah. you. And we are all there for each other and we'll always be. हम आकाशिक रीडर्स बन जाएंगे, हीलर्स बन जाएंगे, तो जो हमें एनर्जी मिली है हम वो दे भी पाएंगे, हम दूसरों को भी हील कर पाएंगे। तब हमें अपना एग्जैक्ट अपना मिलेगा कि हाउ गुड इट फील्स टू सर्व। Absolutely, absolutely. ये That's the नशा purpose now. उफ, नेक्स्ट लेवल नशा है। Absolutely. बट थैंक यू फॉर ईजिंग माय सुनैना's पैसेज। वो तो मेरे पास छोड़ेगी तो नहीं मुझे, और अच्छी बात है रहे। आई एम हैप्पी, इट्स ओके, आई I'm, वेलकम। I'm so happy that Gayatri and Sumedh have you because it will make a big difference in their life, Prachi, 100%. उनकी लाइफ में क्या होगा मुझे नहीं पता। आज से मेरे 5 बच्चे हैं, मुझे ये पता है। आई एम अ मदर ऑफ 5। 3 तो 2 मैंने बर्थ करी, एक को बर्थ होते हुए देखा। उसके माँ बाप से पहले मैंने देखा गायनी के साथ साथ कि मेरा मुन्ना आया है। आई मैनिफेस्टेड माई सन, आई वांटेड अ Yeah, सन, सो मुन्ना पार्थ इज माय मैनिफेस्टेशन। और उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बड़ी माँ के ऊपर है, नॉट ऑन हिज मदर फादर। oh मेरा wow, मेरा बच्चा है ना, आप लोग के थ्रू आया है, तो मेरा बच्चा बी पॉजिटिव बच्चा है मेरा। सो या एंड अब 3 तो थे ही, अब ये 2 और मिल गए सुनैना की वजह से। good. सो अब 5 बच्चों की माँ हूं मैं, पावरफुल मदर। 2 + 3। Lovely. Beautiful. अब आई एम टेकिंग देम ऑन हॉलिडे इन दिसंबर, अगर ताई जी और कुणाल भैया की परमिशन होगी तो। नहीं तो मैं अपने तीनों बच्चों को इन दोनों बच्चों से मिलाने लाऊंगी। बड़े हो गए तो मिले भी नहीं ये लोग, कहाँ मिलना होता है हर साल। तो अब मैं लाऊंगी, कमिंग बैक टू पुणे। सो आई हैव डिसाइडेड, मजा आने वाला है, Now लाइफ। your trips will be more often to Pune now. दे विल बी मेरे 2 बच्चे Yeah, हैं यहाँ पे। एक अमेरिका पढ़ने जा रहा है, absolutely. वापस जाएगा। बट गायत्री तो रहेगी ना यहाँ पे, उसके Yes. आऊंगी या उसके पास आऊंगी जो भी। आई विल बी, आई थिंक महीने में एक बार तो आऊंगी ही मैं, मुझे आई फील। Good. Yeah. या She needs your guidance, whatever. आई नीड टू फ्लो इन लव विद हर, दैट्स इट। Absolutely. Absolutely. इतना ही, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। फातिमा जी आप मिलेंगे ना, यू हैव टू मीट देम वन डे, यू विल मीट देम। इन लोग की ब्याह शादियों में आप लोग को तो बुलाने ही वाली हूँ, और किसी को बुलाऊं ना बुलाऊं, मतलब इन द student community, but you will be part of my celebrations. Oh, sweet. Thank you so अभी तो much. बहुत दूर है, the oldest is 21, the youngest is 13, तो बहुत Long टाइम way है। to go. Thank तो you. yeah. चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। मेरा ब्रेकफास्ट ड्यूटी लग रहा है, मैं जा रही हूँ। Yeah. Okay. Thank you. Thank Bye. you. See you Lots of tomorrow. love for you, Prachi. Lots Yeah. of love for you. Lots of love. To Yeah. everybody, missing Ritu a lot, but I think it's okay। चलो, Okay. bye See you tomorrow. Bye. Bye. bye।